So we will have x minus x bar, y minus y bar, उसके बाद दोनों का मल्टीप्लीकेशन, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और y माइनस वाई बार का स्क्वायर। सीरियल नंबर के कॉलम में 1। नाउ x माइनस एक्स बार कैसे किया जाएगा? नेगेटिव 19.16 डिवाइड माइनस negative 21.66 and so on will make further calculation. तो पहले में x है 19.16 नेगेटिव माइनस 21.66 that is also negative. तो 19.16 नेगेटिव माइनस 21.66 नेगेटिव that is 2.50 positive. सेकेंड उसमें नेगेटिव 2.9 माइनस नेगेटिव 21.66 that is 18.76 positive. Third, it is negative 48.52 minus 21.52, so 21.66. So negative 26.86. So 12.48 negative minus 21.66 negative. So 9.18 positive. 30.18 negative minus 21.66 negative. So 8.52 negative. 9.76 negative minus 21.66 negative. 11.89 positive. 4.1 minus 21.66. 25.76 positive. 33.11 negative minus 21.66 negative. Negative 11.45. 42.94 negative minus 21.66 negative. 21.28 negative. अब y minus y by किया जाएगा. This is the value of the y and this is the value of y bar. So y value is 34.36. Y bar is 7.56. That is 26.8 positive.
43.39 minus 7.56 negative 45.11 minus 7.56 नेगेटिव पॉजिटिव का क्यों ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोनेंस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार करेंगे ना, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगा। 14.61 minus 7.56 26.60 minus 7.56 4.57 minus 7.56 2.99 10.28 minus 7.56 17.84 17.35 minus 7.56 17.29 minus 7.56 तो 9.73। दिस इज y माइनस वाई बार, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा। 2.5 into 26.8 18.76 into 35.83 26.86 negative into 52.67 negative 1414.72 9.18 into 7.05 64.72 8.52 negative into 19.04 162.22 11.89 into 2.99 negative, so 35.55 25.76 into 17.84 negative, so 459.56 11.45 negative into 24.91 negative, so 285.22 21.28 negative into 9.73 positive, so 207.04 सो इसका समेशन किया जाएगा 67 प्लस 672.17 प्लस 1414.72 प्लस 64.72
minus 162.22 minus 35.55 minus 459.56 plus 285.22 minus 207.05. So it is 1639.45. That is the total. उसके बाद x minus x bar का square. So in that case, square of 2.50, square of 18.76, and so on. So square of 2.5 is 6.25. Square of 18.76, 351.94. Square of 26.86, seven 721.46. Square of 9.18, 84.27. Square of negative 8.52, 72.59. Square of 11.89, so 141.37. Square of 25.76, 663.58. Square of negative 11.45, 131.10. Square of negative 21.28, 452.84. So x minus x bar whole square 6.25 plus 351.94 plus 721.46 plus 84.27 plus 72.59 plus 141.37 plus 663.58, 131.10, 452.84, 2625.40. फिर अभी हम लोग करेंगे y माइनस वाई बार होल स्क्वायर. सो 26.8 का स्क्वायर, 35.83 का स्क्वायर, एंड सो ऑन. 26.8 का स्क्वायर 718.24, 35.83 का स्क्वायर 1283.79, नेगेटिव 52.67 का स्क्वायर 2774.13, 7.05 का स्क्वायर 49.70, 19.04 का स्क्वायर 362.52,
नेगेटिव 2.99 का स्क्वायर 8.94, 17.84 का स्क्वायर 318.27, 24.91 का स्क्वायर 620.51, 9.73 का स्क्वायर 94.67, 718.24 plus 1283.79 plus 2774.13 plus 49.70 plus 362.52, 8.94, 318.27, 620.51, 94.67. So 6230.77. This is the total that we have. So now we'll make further calculation. देखो R कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? कोवेरियंस बिटवीन x and y divided by standard deviation of x into standard deviation of y. This is what we understand. So covariance between x and y is calculated as summation x minus x bar into y minus y bar divided by number of observations. तो x minus x bar into y minus y bar उसका टोटल कितना है? 1639.45 divided by number of observations कितने हैं? 9. Here 9. So 1639.45 upon 9, that comes to 182.16. तो ये कोवेरियंस हो गया न्यूमरेटर. फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन x. इट इज अंडर रूट ऑफ द वेरियंस, जिसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? x माइनस एक्स बार का स्क्वायर उसका समेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ये करके फिर उसका समेशन करेंगे 2625.4 2625.4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने? 9. उसका अंडर रूट किया जाएगा 2625.4 डिवाइडेड बाय 9. जो भी आंसर है उसका हम लोग अंडर रूट करेंगे. दैट इज 17.08. दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन x. उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन y. इट इज y माइनस y बार होल स्क्वायर उसका समेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो दिस इज 6230.77. 6230.77 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 9 और उसका रूट किया जाएगा. So again I request you to use your calculator. 6230.77 upon 9. तो ये वेरिएंस हो गया फ्रेंड्स, उसका रूट किया जाएगा. तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया 26.31.
दैट इज विद द स्टैंडर्ड डिविएशन इज फाउंड। नाउ आखिरी में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे आर का, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, उसका कैलकुलेशन होगा कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई divided by standard deviation of x into standard deviation y। कोवेरिएंस कितना है 182.16 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x into स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, यानी क्या किया जाएगा 17.08 into 26.31। So 182.16 upon 17.08 upon 26.31, that comes to 0.4054। Now friends, यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, Mr. X is of the opinion that the market has recently shown weak form of market efficiency. In order to test the validity of his impression, he has collected following data relating to the movement of the SENSEX for the last 20 days. You are required to test weak form of market efficiency using autocorrelation test। तो हमको टेस्ट करना था कि मार्केट में वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी है या नहीं। हमने आर का कैलकुलेशन कर दिया। नाउ आइडियली, एकदम अच्छी तरह से सुनो, आइडियली अगर आर का वैल्यू 0 है, देन वी अंडरस्टैंड दैट्स द मार्केट इज इन वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, यानी कि पास के प्राइसेस से फ्यूचर का प्राइस का कोई कनेक्शन नहीं है। That is what we understand is the R0 is the ideal answer for weak form of market efficiency test। यानी कि जब R0 है तभी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं डेट से दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ओके, गोइंग फर्दर, अगर R0 से कम है तो दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है, और अगर R पॉजिटिव है तो दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। Now, as far as the theory is concerned, the theory has not given any range कि suppose कि R अगर let us say negative 0.25 से positive 0.25 के बीच में है तो दोनों के बीच में कोई relationship नहीं है, ऐसा हम लोग conclude करेंगे। In a way that say what is the range of the R for which we can say that say there is no relationship, ऐसा कुछ उन्होंने दिया नहीं है। Over here, so the answer is 0.4054. For that, say we can write the answer that दोनों के बीच में moderate positive relationship है, यानी price change of the one period has moderate positive relationship with price change of the other period, so the market is not in weak form of market efficiency। With paragraph write down, correlation coefficient between price change of one period has moderate positive relationship with price change of other time period। So market is not in weak form of efficiency। फुल स्टॉप। एक समरी छोटा सा पूरे आंसर का, हमको यहाँ पे 20 टाइम पीरियड दे रखा है, 20
उसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया, 10-10। क्वेश्चन में पूछा दैट से मार्केट वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी में है या नहीं, वो आपको टेस्ट करना है। तो पहले 10 दिन का प्राइस चेंज कैलकुलेट किया और नेक्स्ट 10 दिन का प्राइस चेंज कैलकुलेट किया। उसके बाद दोनों के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर का कैलकुलेशन किया। वी अंडरस्टैंड दैट से आर कोरिलेशन कोएफिशिएंट उन दोनों के बीच में मॉडरेट पॉजिटिव है। दैट इज द रीजन वी अंडरस्टैंड दैट से द मार्केट इज नॉट इन वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। इसका मतलब ये है कि हम लोग पास प्राइसेस से फ्यूचर का प्राइसेस प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ऐसा है, तो मार्केट इज नॉट इन वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, इसका मतलब ये होता है।